we'll have a U.S. national anthem and Pakistani national anthem. After that, we'll be taking a break for Maghrib prayers. And then after that, we'll be resuming our program. Thank you. अटलांटा चैप्टर की तरफ से मैं हूँ नूरुल खान और मेरे साथ स्टेज पे हैं असद बाजवा साहब। आप सबको अटलांटा की खुनक फ़ज़ाओं में खुशामदीद। I welcome you all. I give you a warm welcome to all of you, especially our guests from Pakistan, Dr. Sarosh Lodi, Vice Chancellor of Ned University, the Ned 2024 Atlanta 18th International Alumni Convention Open. Within a year, we will have a new chapter added to Nedian NA Family Association. Our network will, grow larger, and then we will take this convention to a location where this has never been organized. So again, thank you and welcome. I have a long list of appreciation and recognition from NED Alumni Network of North America from our board that I'm keeping for tomorrow evening. I would like to invite our Convention Steering Committee Chair, Mr. Mohammed Shahid Khan. Shahid, please come to the stage and introduce your CSC team. I am the chairperson of this convention in Atlanta. I'm not from here. I'm from Connecticut. और मेरे काफ़ी से ज़्यादा दोस्त हैं अटलांटा में, मेरे क्लास फेलोज हैं। मेरा ताल्लुक़ जो है वो 1984 सेकंड शिफ्ट मैकेनिकल डिपार्टमेंट से है और मेरे कई दोस्तों ने यहाँ पे चैप्टर बनाया। तो ये जो चैप्टर बना 4 से 5 महीने पहले ये पूरा सेटअप हुआ और उसमें सबसे बड़ा काम जाहिद का था। उन्होंने बहुत मेहनत की और उनके साथ और लोग भी जुड़ गए और उन्होंने इस चीज़ को विदिन कपल ऑफ मंथ फॉर्म किया, नॉन प्रॉफिट स्टेटस और वेबसाइट, सोशल मीडिया। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर आई थिंक इज क्रिएटेड इन NA हिस्ट्री। तो ये सब लोगों ने बड़ी हिम्मत दी और आज हम जो है यहाँ बैठे हुए एक नया चैप्टर बना के और ये कन्वेंशन अटलांटा में कर रहे हैं। तो मैंने 13 कन्वेंशन अटेंड किए। मैं ये देखता था कि जब मैं कन्वेंशन अटेंड करता था और चला जाता था तो सूट वूट पहना और टाई वाई पहनी, लेकिन जब ये मैंने कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया टुक अबाउट 300 जूम कॉल। मैं स्टार्ट करता हूँ अटलांटा के लोगों से ताकि लोग नए चेहरे देखें और उनको उनकी हिम्मत अफजाई करें ताकि वो आगे बढ़ें और नया चैप्टर फ्लोरिडा में, साउथ कैरोलिना में, नॉर्थ कैरोलिना में बनाएं। बहुत शुक्रिया सबका। First of all, we did not think that we can pull it off, to be honest with you. Being as a newly found chapter, February, and now we are into all the way, convention kara rahe hain. But thank you everybody for, for your patience and for your support. Especially my CSC team, my seniors. We were newly founded chapter. We have no idea what to do, but they guided us all the way through, to every step. So alhamdulillah, we did it what we did. Shahid bhai and everybody else was great. Thank you everyone. Jazakallah for your participation. Assalamu alaikum. So now we invite Mr. Abdullah Jafri to give us some update on the Citizen Foundation, TCF.
what the Citizens Foundation is. Citizens Foundation was formed in 1995 with 5 schools, and the focus was to provide quality education in quality environment to children living in slums and rural areas. That was the focus, because education is the fundamental and root cause of the problems Pakistan is facing today. So far, we have had 63,000 graduates from Citizens Foundation. Economists of UK, which is a very prestigious publication, they said that Citizens Foundation is perhaps running the largest network of independent schools in the world, not Pakistan, in the world. Citizens Foundation believes in quality education, quality buildings. Ones who go to Pakistan, children going to very prestigious private schools, when their children come home in the evening, they get 2 or 3 tutors to give them tuition in the evening. Citizen Foundation children cannot even dream of private tuition. They cannot. Despite that, and we have, by the way, we have chosen the federal board. And federal board is much more difficult than provincial boards. With that federal board, 88% children are passing their board exam in A+, A and B grade. So that is what we are teaching in our schools and the quality of teachers. Next slide, please. Again, by design, Citizen Foundation has 50% girls and 50% boys in each and every school. So we keep a gender balance. We are known as having total marvelous financial transparency. Charity Navigator and GuideStar, 2 of the largest monitoring agencies in the world, they have declared Citizens Foundation, the rank they have given, there is no better rank than that. So that is our financial transparency. All our financial reports, our tax returns, they are on our website. Citizen Foundation is the largest employer of women in Pakistan in the private sector. Our overhead expenses, audited by PwC, they have stayed under 10% forever. Next one, please. 275 plus US corporations, they match the donations of their employees, like Bank of America, Chase, and so on. Next one, please. We have won innumerable international awards. You can see that, UNESCO, Library of Congress, Clinton Global Initiative. You remember Expo 2020 in Dubai? 1,147 charities were competing for an award out of 141 countries. Citizen Foundation was one of the 10 getting that award, the only Pakistani charity. Then we have Ramon Magsaysay Award, which is equivalent of Nobel Prize of Asia. United Nations Girls Education Initiative, World Economic Forum. Next one. We are Sharia compliant. We have certificates from muftis that you can give your zakat, sadaqah and everything. So we are totally compliant, and we maintain a totally different bank account for all zakat funds. Citizen Foundation alumni you can find in every good Pakistani university in Pakistan. We are one of the strongest alumni associations in Pakistan. अभी आपके सामने मैं एक और ऐसे इंसान को दावत देना जा रही हूँ जो कि एक और सोशल कॉज से वाबस्ता हैं, ओबैक से अनवार खान। अल्हम्दुलिल्लाह आज, अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, आज हम लोग तकरीबन 13 स्कूल चला रहे हैं जहाँ 7,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं।
हमारे बच्चे इस वक्त मेडिकल में हैं, इंजीनियरिंग में हैं। मैं अपने तमाम दोस्तों का, साथियों का, खुसूसन एनडी के साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ खड़े हुए और हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे, मुझे इसका यकीन है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हमारे यहाँ एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये है पाकिस्तानी फैमिलीज़ के अंदर कि बच्चे को या तो आपने डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है। उसके अलावा हम दूसरी कोई बात सोचने से पहले सोचते ज़रूर हैं कि क्या ये एडवाइस करना भी बच्चों को ठीक है कि नहीं। लेकिन अभी हाल में मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने कहा कि कोशिश करें कि बच्चे ऐवानों तक पहुँचे। जिस मुल्क से हम आए हैं वहाँ ऐवानों में बात करना और उस बारे में सोचना खासा मुश्किल है, लेकिन यहाँ हमारी खुशकिस्मती है कि अटलांटा के कई चेहरे अब ऐवानों का रुख कर रहे हैं। उन्हीं में से एक साहब हमारे साथ हैं जिनका ताल्लुक़ है डेमोक्रेटिक पार्टी से, और जॉर्जिया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वो हमारी पूरी कम्युनिटी को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन ही इज़ बीन रिप्रेजेंटिंग. He shows up when there is a calamity. He shows up when there is a celebration. He is one of our own from Georgia. Put your hands together for Mr. Farooq Mughal. As a first Pakistani American elected in the state of Georgia, I believe that apart from a businessman, doctor, engineers, I think it's extremely important for us to have a voice at the table. We are in a place right now where we need more voices like us, not for us, but our future generation. It's extremely important that people who are serving look like us, understand our ethnicity, understand our religion, understand who we are as Pakistani Americans. So Pakistani Americans have been a backbone for almost so many years, or decades before I even came here. And they're creating so many resources, entrepreneurship, doctors, obviously, Nedian University. So I tell you what, when I got elected the first time when I visited Pakistan, I actually toured Nedian University and their technology incubator center. And I have to tell you that that was the most proudest moment for me as somebody who was born in Karachi, came here, got educated, got elected, and then went back to make a difference. And that difference was that I was talking about how we can unify our education system in US and how we can unify what we can give back to Pakistan. For me, education is the #1 priority. If we want to change things in Pakistan, we have to educate people. We have to invest in education. And I'm so proud of one moment that I can tell you that when I was listening to all these young students from Nedian, not a single person asked me a question about how do I get a visa, where do I need to go to American Embassy, and how do I get a job in America. Not a single person. You know what they asked me? How can you bring knowledge from US to Pakistan? They wanted to create jobs and economy and young talent locally in Karachi, locally. And that was such a proud moment for me that we have this perception about everybody wants to come here, everybody wants to live in America. How do we get here? But you should thank your leadership of what that university has created as of today. So one thing that I did was I did connect Nedian University with your #2 engineering school in the nation and in the world, Georgia Tech Institute of Technology. I connected them with professors who are teaching them how to create incubators, how to create apps, and how do we create local economy and generation. So that was my first step after getting elected to go to Pakistan. So many thanks to you. So many thanks to you and the Alumni Association for creating a foundation for the future or of generation, not here, but also in Pakistan. It's time we will be recognizing some of our donors here.
So for that, I invite our Vice Chancellor from NED, Dr. Saroj Lodi, Nedian NA President, Dr. Asma Ali, and our CSC Chair, Mohammed Shahid Khan. Please come to the stage. This time, we'll be inviting our silver donor to the stage to receive their plaques. Mr. Maqsood Malik, he's with M&J Engineering. Our second silver donor is Mr. Tariq Hamid. He's with Dallas Geotech. Wamik Hamid, he's here. He's a brother of Mr. Tariq Hamid. He can receive the award from Dallas Geotech. इंसान उसी सूरत में आगे बढ़ सकता है जब वो अपने साथ वालों को लेके चले। हम में से बहुत सारे लोग किसी ना किसी की मकाम पे पहुंच के बहुत अकेले हो जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ या तो वो लोग वाबस्ता होते हैं जिन्हें हमसे कोई मतलब है, या ऐसे जो हमें इस्तेमाल करके छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम खुशकिस्मत हैं जो इन सारी बातों को पसे पुश डालकर दूसरों को साथ लेके चलना अपना अव्वलीन फरीज़ा समझते हैं। ऐसे ही एक शख्स अटलांटा में मौजूद हैं। ही इज़ अ ब्रिलियंट मैन। जितने भी फिलांथ्रपी के काम हैं, जितने भी फंड रेजर्स होते हैं, मैं पिछले 10 साल से उनको हर जगह देख रही हूँ और मैंने हर जगह उनको यही बात करते हुए सुना है, आगे बढ़ो और सबको साथ लेके चलो। आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा रहीम शाह आखुंदखेल, representing Voices of Muslim. The Constitution of this country gives us the same rights and the same privilege as those people who have been living here for 200 years. So then it becomes our responsibility to make sure that we take advantage of those privileges and those rights and those opportunities. Now, we're fortunate because, especially the Pakistani community, people sitting here, I would say that wealth-wise, we may be the top 2 or 3% of this country. If we did not have the educations from institutions like NED or Dow Medical College or Khyber Medical College and all those university free educations, guess what? We would not have been where we are today. So we owe that country a lot. But in the meantime, we have obligation to this country as well. So we put a small group together called Voices of Muslims, and our basic objective was that we want to create our voices, how to influence policies and laws at the city level, county level, state level, and federal level. If you really want to help Pakistan, get some people in the Senate, in the House, who are pro-Pakistanis, and guess what? We will do far more for Pakistan than you and I do as an individual. Once again, good luck with the convention, and thank you very much. जिनके लिए मुझे ये कहने में कतई कोई आर नहीं है। आपने सुना होगा, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, लेकिन इस शख्स पे इस बात का इतलाक़ होता है, खुदा जब हुनर देता है सखावत आ ही जाती है। मेरी नॉलेज में कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो इनको ना मिला हो उस खिदमत के लिए, उस कार खैर के लिए जो ये सर अंजाम दे रहे हैं। आप लोगों में से कई लोग इनके साथ इसमें शामिल हैं। NED के कई डोनर्स हैं जिन्होंने इनकी मदद की है। ये एक ऐसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट, जिससे इस कदर बेजारी और इस कदर नख़वत का इजहार किया जाता है कि वो ख़वातीन जो इसमें मुब्तला हैं उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, उन्हें दरख्तों के नीचे डाल दिया जाता है और उनके पास से उठने वाले ताफ़ुन के हाथों मजबूर होकर कई लोग उनको अपने आप से इतना दूर कर देते हैं कि वो सिसक के जान दे देती हैं। ये है कमज़ोरी हमारे माशरे की, जहाँ पर इंफॉर्मेशन और नॉलेज ना होने की वजह से कई लोग कई बीमारियों का शिकार होकर सड़कों पर जान दे देते हैं। अपनी भरपूर तालियों में यहाँ इस्तकबाल कीजिए उस शख्सियत का जो कोही गोट विमेन हॉस्पिटल चढ़ा रहे हैं, आपके और हमारे डॉक्टर शेर शाह। सबसे पहले तो मैं नेडियन का हद से ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस बात का मौका दिया कि औरतों की सेहत के बारे में पाकिस्तान में जो हाल है उसके बारे में कुछ बताऊँ। पाकिस्तान में 1 लाख, आप अमेरिका में अगर 1 लाख प्रेगनेंसी होती है तो उसमें 6 औरतें मरती हैं, इंग्लैंड में 4 और स्वीडन में 2। पाकिस्तान में अगर 1 लाख औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो उसमें 450 औरतें मर जाती हैं। इसका मतलब यह है कि हर घंटे पे 2 औरतें मरती हैं। साल में 20,000 औरतें मौत का शिकार होती हैं, जिनका कसूर सिर्फ ये होता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। और उसके अलावा
तकरीबन 6 लाख औरतें ऐसी होती हैं जो मरती नहीं हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी से बदतर होती है। उनका पेशाब बहता रहता है, उनको मुस्तकिल दर्द होता रहता है, उनको इनफर्टिलिटी हो जाती है, उनके शौहर से ताल्लुकात बरकरार नहीं रहते हैं, वो डिप्रेस होती हैं। पाकिस्तान में 70% लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। पाकिस्तान में 3 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ये इन बच्चों की तादाद उनसे ज़्यादा है जो स्कूल जाते हैं। जब तालीम ही नहीं होगी, ख़ासतौर पर जब लड़कियों की तालीम नहीं होगी, तो उनकी मौत और उनका मैटरनल डेथ में मरना एक नागुज़ीर बात होती है। हल क्या है? हल तो तालीम है। पाकिस्तान के 85,000 गाँव में कम से कम 2-2 मिडवाइफ होनी चाहिए, और जब तक 2-2 मिडवाइफ नहीं होंगी मसला हल नहीं हो सकता है। तो हम लोग मिडवाइफरी की ट्रेनिंग करते हैं, पूरे पाकिस्तान में कोशिश करते हैं, हुकूमत को मजबूर करते हैं कि आप मिडवाइफ बनाएं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। So this is the time again we'll be introducing our gold members, gold sponsors. So for that I'll invite VC Dr. Lodi again to the stage, Asma, Dr. Asma, and Shahid. So our gold sponsor, Mr. Arif Zafar Mansouri, he is with Pakistan Link and Urdu Link. Please come to the stage. Thank you. Our next gold sponsor, Mr. Sohail Ahmed, he is with New York Asphalt. Thank you. And our next gold sponsor, Zahid Ismail, is with the ZI Engineering. Zahid Noor, Dr. Asmali, and Mr. Rashid Ali Bey. Thank you. Now I would like to invite our another very important team, our fundraising team. Mr. Mujahid Ali, Zahid Noor, and Aslam Siddiqui, Mr. Mehdi Kamal, and Rashid Ali Bey.